How long have you been married? I've been married for 16 years now. Are you romantic? Am I romantic? Yeah. I think I am. I like to Are think you I am. blushing? I don't know if I'm blushing. I don't know. I can see myself. Yeah. आपको feel हो रहा है? No, I'm not. I'm not blushing. Yeah. No, yeah. I get. Okay. I blush when someone admires me. मुझे वो थोड़ा सा awkward लगता है. तब मैं blush करने लग जाता वो हूँ. तो आपको आदत नहीं होगी कॉलेज से? College से? Of course. अभी तो आके आप मतलब अभी तो आके आप एकदम से good looking और वो नहीं हो गए ना, आप तो शुरू से ही इस तरह होंगे. I wish that was the case. नहीं, that's not the case. So you started modeling at 20 years old. जी. So modeling में ऐसे तो नहीं चलेगा, good looking तब भी होंगे आप. तो कॉलेज में मैं तो expect कर रही हूँ कि लड़कियाँ इधर उधर बहुत crushes, बहुत आपको messages सब हो रहा होगा, नहीं? हाँ, तब cell phones होते नहीं थे. तो फिर कैसे communicate करते थे? I don't know. I guess हर era का एक अपना वो होता है, चार्म होता है मेरे ख्याल से. आपके era का चार्म क्या था? मेरे era का चार्म क्या था? मेरे era का चार्म bowling alley थी और क्या था? लाहौर की बस एक दो रेस्टोरेंट्स थे जी. हाँ, ये था. आहिस्ता खुल रहे हैं. हाँ जी, लाहौर के दो तीन रेस्टोरेंट्स थे और वही all the cool hangouts and all. So yeah, attention I guess मिलती थी या You're being humble. काफी मिलती होगी, I am sure. हाँ, I don't know, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था राबिया? मेरा क्वेश्चन ये था, मैं खुद भूल गई मेरा क्वेश्चन क्या था. Hey, coming back to, so I was asking, are you a romantic? I like to believe I am. I like to believe because it's a very strong human emotion. So yes, and अगर आप एक एक्टर हो, तो I think वो होना ज़रूरी है आप में. So what's the most romantic thing you have done? I've done a lot on screen, I think. नहीं, हम real life का पूछ रहे हैं. Screen पे तो हमें भी पता है, वो तो हमने भी देखा हुआ है. We want to get real life inspirations for the young people who are listening. I don't know. I think just being kind is very, and just nice. Being an altruist and considerate, having empathy, having compassion. I think those are the things that could be romantic also. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. I think ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं. वो ज़्यादा ज़िंदगी में वैल्यू लेकर आती हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है. But no candlelight dinner, no surprises in a I don't know, surprise vacations or what else? Like I'm trying to think. Yeah. Candlelight dinners हुए हैं. Or walks, long Candlelight walks. dinners, हाँ, walks on the beach भी हुई है और. वो कोई एक चीज़ जो आपने की हो. जो कोई एक चीज़ मैंने सिंगल आउट की हो, हाँ. या आपके लिए की गई हो, चलें ये बता दें. I think जो किए वो आसान है बताना, है ना? क्या? I think thoughtful gift देना भी I think is a romantic thing, right? तो हाँ, thoughtful gift ज़रूर दिया है मैंने. Okay. So आजकल Gen Z जो है ना बहुत बात करती है love language की. कि what are the ways you show love? So what are your ways of showing? What's your love language? अगर मैं पूछूं दो तीन चीजें जो आप बोलेंगे कि हाँ, that's how I show care or love for my partner. I think just being there for them, just being there for them in wellness or sickness or through thick and thin, I think that's my love language. Just being there for the other person. ये तो सीरियस सवाल हो जवाब हो गया ना. थोड़ा फन वाला बताएं ना. जी बताएं, पूछें. हाँ. इमाद इज लाइक ये मुझे छोड़ेंगी नहीं. इमाद का मेरे को हुआ था. अच्छा बताएं. पूछें. इमाद मैं क्यूट सवाल पूछ रही हूँ. नहीं क्यूट सवाल नहीं है. हाँ क्यूट सवाल है. तो सवाल करके फोर्स भी कर रही हूँ जवाब देने के लिए. लेकिन I don't know, मैं like buying maybe she likes cupcakes, getting a cupcake for her on the way to house, or getting a perfume, or maybe flowers, you know, or picking, or knowing that oh she likes this kind of coffee, you know, coffee में इतनी sugar होनी चाहिए. मुझे लगता है ये छोटे छोटे actions. मुझे तो ऐसी cute details चाहिए. मुझे कोई बहुत grand gestures की बात नहीं. हाँ तो ये such details कि वो bed, maybe she's sitting, you'll bring a you know blanket to her, or you'll put in her favorite Netflix shows. मैंने इतने ideas दे दिए, आप मेरा idea चुरा लें और बता दें मैं ये करता हूँ राबिया. अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपने इतनी बातें कर दी हैं तो हाँ ये कभी-कभार होती हैं चीजें. Yeah. We still want to know your love language. Just being there, just taking care of the other person, small things जो उनको पसंद है, जो चीजें उनको insensitive लगती हैं, उधर ना जाना और yeah, not to trigger them, not to gaslight them. ये तो बहुत मैं serious अब. नहीं सही है, अच्छा है. Not to gaslight them and just having empathy, just having some consideration for their feelings, I think. Yeah.
this is what my little language. little things are. That's your love language. जी. That's beautiful. Thank you for sharing this. अच्छा ये बताएं, जो यंग लोग सुन रहे हैं आजकल बड़ा बेचारे शादी पे ट्रस्ट नहीं है, कमिटमेंट से घबराते हैं, तो माशाल्लाह से you've seen ups and downs in your relationship. What would you say to a young couple or a young person listening to you कि क्या 2-3 चीज़ें या कुछ एक चीज़ आप बोलना चाहेंगे to strengthen relationship or to go through वो टाइम जब आप ऊपर नीचे जा रहे होते हैं? I think वही compatibility or giving the other person the space, accepting them the way they are, not playing on their insecurities, not demoralizing them on their weaknesses, accepting the way they are, encouraging them. I mean, शादी though it's like a partnership, जिस तरह मैं team की बात करता हूँ, तो it's a team, and just like any other thing, I mean, it takes hard work to build a relationship. It takes hard work to make a marriage work. True. So just like that, you have to work hard at it. And after getting married, since आपने सवाल किया, I think my life changed, and I'll give this to Mariam, that she is one of the catalysts who instilled the belief in me that you have what it takes. Yeah. Make the most out of your potential. You're right now not realizing what you can do. So I think that's the most beautiful gift that anyone can give. एक Mark Twain का quote है बहुत, once again, not to become too philosophical or intellectual. Quote है वो ये कि stay away from people who belittle you and your ambitions. Small people always do that. But the really great ones make you believe that you can be great too. I mean, that's मेरे ख्याल से a sign of a great person who make you realize that you can be great too. और बहुत कम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ना, जो आपको empower करें, आपको push करें उस तरफ जाने के लिए. जी, बिल्कुल. Because आप खुद हमेशा self doubt में रहते हैं. बिल्कुल, and absolutely. I mean, one of the quotes that changed my life was, once again, Mark Twain. मैं लोग कहेंगे क्या यहाँ पे हमें English का सबक सिखाने पे बैठ गया. The two most important days in your life are the day that you are born and the day you find out why. Yeah. So I think my why came relatively late in life. Lekin it's always better to be late than never. So what's your why? Just to know myself, just to discover who I am. And I think us lihaz se, the profession that I chose, acting, it in a way changed my life. It in a way saved my life. It in a way gave me this vehicle जहाँ पे मैं अपने आप को discover करूँ, अपने emotions को discover करूँ, अपने potential को discover करूँ. आप मरियम को माशाल्लाह से बहुत credit देते हैं हमेशा. I've heard it in multiple interviews, and माशाल्लाह से आप लोग, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. Do you think love can heal? Love healed you, and should love heal? I mean, love is the only way to heal, I think. अच्छा, आप ये यकीन रखते हैं? I mean, XYZ, hypothetically, if someone's being neglected, discouraged all their life, and they get encouragement or love or some sort of comfort from somewhere, so that's where the healing begins. Or sabse pehle, you have to begin the healing. You have to love yourself, not in a narcissistic kind of a manner, but you have what I said about accepting yourself. I think it's about accepting yourself and loving yourself. ये बड़ा होता है शादी में, इतने अरसे के बाद स्पार्क खत्म हो जाता है. ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत चलती है. एंड मैं जब ये सवाल लिख रही थी तो मेरे जहन में आया, what is this thing about कि स्पार्क को अलाइव रखें? क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करनी भी चाहिए जब ज़िंदगी आपकी चलना शुरू होती है? इधर से एक चीज़ आ रही है, उधर से एक चीज़ आ रही है, आप ज़िंदगी को बैटल करने में मसरूफ़ हैं. उस वक्त ये सोचे यार, कीप द स्पार्क अलाइव. डज इट मेक सेंस? इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइज together do? I think, or you think it is important? I think it's very important because together you're growing, together you're going through the twists and turns and the obstacles of life. So usme you're evolving together, you're learning about each other, or in that process of learning, I think आप realize करते हो कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको as an actor हर वक्त अपने आप को upgrade करना है, तो I think relationship के अंदर भी आप हर वक्त आपको अपनी relationship को भी upgrade करना है. That's what I think. I might be totally wrong.
नहीं आप हाँ। गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि हाँ, बट अपग्रेड कैसे करना है? अपग्रेड कैसे करना है? हाँ कि अपग्रेड, बिकॉज मुझे ना ये चीज, हाँ। मुझे लगता है कभी कभी हम चीजें कहना आसान होता है बट उनको प्रैक्टिकली करना ना हम भी लॉस्ट होते हैं। कितना आसान होता है यार एक दूसरे